आप सभी को नमस्कार। आइए दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करते हैं। कक्षा 10 विषय गणित। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2 of question number 1 chapter 3 pair of linear equations in two variables. Let us develop the class. Let us read the question number 1 of exercise 3.2. The instruction of question number 1 is in this way. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically. निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल प्राप्त कीजिए। This is the question number 1. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। Let us start to solve this question. Solution. Let the number of boys and girls be x and y respectively. मान लिया कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः x और y है। Let us develop the class. Required pair of linear equation will be according to the question x plus y equal to 10. This is equation number 1. x plus y बराबर 10 होगा। यही पहला रैखिक समीकरण होगा। Again according to question y equal to x plus 4. This question tells us number of girls is 4 more than the number of boys. Therefore y equal to x plus 4. Now develop this one, then we get x minus y equal to minus 4. This is the second linear equation. In this way we become succeed to find out first linear equation and second linear equation. Now we try to solve this question or find out the value of x and y with the help of the graphical method. For this we draw the graph of x plus y equal to 10 and x minus y equal to minus 4. Let us develop the class. Now recall the first linear equation. This is x plus y equal to 10. For this we prepare a table. The required table will be in this way. X equal to, then y equal to 10 minus x. So x equal to 0, then y equal to 10. X equal to 3, then y equal to 7. Similarly, when x equal to 10, then y equal to 0. This is the table of the first linear equation x plus y equal to 10. Similarly, we prepare the second table for the second linear equation. This linear equation is x minus y equal to minus 4. Required table will be in this way. When x, then y equal to x plus 4. When we put x equal to 0, then we get y equal to 4. Similarly, when we put
x equal to 3, then we get y equal to 7. When we put x equal to minus 4, then we get y equal to 0. This is the required table of the second linear equation. Now we draw the graph. Here we draw x-axis and y-axis. Both are intersect each other at the origin. Now we plot the points of the first linear equation and second linear equation. For this, for the first linear equation, we plot when x equal to 0, then y equal to 10. Therefore, here x equal to 0 and we get here y equal to 10. So, this one will be when x equal to 0, then y equal to 10. Similarly, when x equal to 3, then y equal to 7. We plot this point, then we get here x equal to 3, then y equal to 7. Similarly, when x equal to 10, then y equal to 0. So, this is when x equal to 0, then y equal, when x equal to 10, then y equal to 0. Now we join these 3 points and get the graph of x plus y equal to 10. So this is the graph of x plus y equal to 10. Similarly, we draw the graph of x minus y equal to minus 4. For this we plot these points. When x equal to 0, then y equal to 4. When x equal to 3, then y equal to 7. And when x equal to minus 4, then y equal to 0. तो दूसरे रैखिक समीकरण का भी आलेख खींचते हैं। इसके लिए हम लोग इन बिंदुओं को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब x बराबर 0 तो y बराबर 4, और उसी प्रकार से जब x बराबर 3 तो y बराबर 7। पहले से ये पॉइंट लोकेट किया गया है पहला ही रैखिक समीकरण में। लास्ट में जब x बराबर -4 तो y बराबर 0। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर, ये तीनों बिंदुओं को मिलाने पर ये रेखा प्राप्त हुआ। यही रेखा x माइनस वाई बराबर -4 का आलेख होगा। तो x माइनस वाई बराबर -4 का ये आलेख हो गया। देखते हैं कि दोनों ही आलेख एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और जिसका निर्देशांक 3 और 7 है। बाईं ओर x अक्ष का मान बताता है, दाहिना वाला y अक्ष का मान बताता है। यहाँ पर बाईं ओर वाला लड़कों की संख्या एवं दाहिनी ओर वाला लड़कियों की संख्या बताएगा। सो द नंबर ऑफ बॉयज विल बी 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल विल बी 7। Let us verify our answer. If we add 4 in the number of boys, then we get 7, which is verified, which is asked or said in this question. The number of girls is 4 more than the boys, so it is verified. The total number of students who participate in the quiz is 10, so we add 3 plus 7, then we get 10. So first condition is also verified. So the determined answer is correct. Hope that not a single student has problem to understand this explanation or explanation of this solution. If anybody has problem, then write into the comment box. I shall try to resolve or clear your doubt. As per your requirement, write down your question into the comment box. I shall try to solve your question. Thanks to all of you till this time.